कोरोनार मुकाबिला पाई भारत में दुईटी टीका को डीसीजीआई रो मिलिला अनुमति। कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को जरूरी व्यवहार नहीं डीसीजीआई रो अनुमति मिली। सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक टीका को मिलिला अनुमोदन। कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकाकरण नहीं विधिवत अनुमोदन मिली। पूर्वर विशेषज्ञ कमिटी टीका व्यवहार को देइथिले अनुमति। एबे डीसीजीआई टीका को अनुमति देबा परे खूब शीघ्र देश में कोरोना टीकाकरण आरंभ हेबो। अनुमोदन पाइबाकु थिबा कोवैक्सीन स्वदेशी ज्ञान कौशल रे निर्मित प्रथम टीका। भारत बायोटेक एवं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मिलित भावे कोवैक्सीन रो विकास करिसेंती। सेही बोली कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एस्ट्राजेनेका विकसित करथिबा पळे पुणेर सेरम इंस्टीट्यूट भारत रे एहाको प्रस्तुत करिछि। एही संस्था कोविशील्ड रो 5 कोटी डोज प्रस्तुत कर सारिछि। एबे ड्राई रन रो प्रक्रिया जारी रहिछि ओ एहा सकारात्मक रहिछि। तेज बड़ खबर आसी जितेबाला कोरोना महामारी को नहीं समस्ते चिंतित अच्छा। पाखापाखि मार्च मासरू देश में लॉकडाउन सटडाउन जारी रही धीरे धीरे जितेबाला कोहल होसबू भितर समस्त अपेक्षा रही केबे टीका आसिब। तेबे वर्तमान समय भारत में दुईटी टीका को अनुमति मिली और डीसीजीआई यह दुईटी टीका को जरूरी व्यवहार पर अनुमोदन करिसेंती कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तेबे कोवैक्सीन कथा जदि कहबा यह भारत बायोटेक द्वारा प्रस्तुत स्वदेशी टीका हेउछि कोवैक्सीन। जो कोवैक्सीन टीका को पूर्व अनुमति मिलिथिबा बेले डीसीजीआई रो अनुमति केबे मिलुछि ता उपरे नजर रहितला एवं एसबु भितरे आज डीसीजीआई अनुमति देइछि। कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को जरूरी व्यवहार पई डीसीजीआई अनुमति देइछि। सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक टीका को मिलिछि अनुमोदन। कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकाकरण नै विधिवत अनुमोदन मिलिछि। पूर्वरु विशेषज्ञ कमिटी एही टीका व्यवहार को देइथिले अनुमति। Messrs. Serum Institute of India, Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector Covishield encoding the SARS-CoV-2 spike S glycoprotein with technology transfer from AstraZeneca, Oxford University. The firm submitted safety, immunogenicity and efficacy data generated on 23,745 participants aged more than or equal to 18 years or older from overseas clinical studies. The overall vaccine efficacy was found to be 70.42%. Further, Messrs. Serum was granted permission to conduct Phase 2/Phase 3 clinical trial on 1,600 participants within the country. The firm also submitted the interim safety and immunogenicity data generated from this trial, and the data was found comparable with the data from overseas clinical studies. After detailed deliberations, subject expert committee has recommended for the grant of permission for restricted use in emergency situation subject to certain regulatory conditions. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. Messrs. Bharat Biotech has developed a whole virion inactivated coronavirus vaccine named Covaxin in collaboration with ICMR and National Institute of Virology, Pune, from where they received the virus seed strains. This vaccine is developed on ViroCell platform, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally. The firm has generated safety and immunogenicity data in various animal species such as mice, rats, rabbits, Syrian hamster, and also conducted challenge studies on non-human primates, rhesus macaques, and hamsters. All this data has been shared by the firm with CDSCO. Phase 1 and Phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects, and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The Phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date
Approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. The subject expert committee has reviewed the data on safety and immunogenicity of the vaccine and recommended for grant of permission for restricted use in emergency situation in public interest as an abundant precaution in clinical trial mode to have more options for vaccinations, especially in case of infection by mutant strain.